Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to another Career247 video. Of course, PD10 is their maximum discount code. So go and use PD10 on their website. Also, link to the video will be in the description down below. So please also make sure to check that out as well. Today's video, I got pinged. I just woke up. Listen. I just woke up. I got a cup of coffee right here. I'm shaking myself awake, right? And tons of pings about this one. Tons of pings saying, "Hey, watch it, react to it, quickly." So what is the topic on today's video? USA did not like what India did. Viral video of Commerce Secretary. Now, I'll be honest with you, I'm not entirely certain what this is referencing to, so we will give it a watch and find out. I don't know. I'm new to this topic entirely. So, yeah, link to the video will be in the description below. Go and check it out. Anyways, get into the video. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 मैं हूं प्रशांत। Good old Trump. God, look at this. Look at this image of Modi. धवन। नाउ ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प This guy right here. के आज के समय आप कह सकते हैं राइट हैंड मैन है। ये है Right hand man, Howard Lutnick? I don't know about right hand man, but he is part of his cabinet, sure, an aide, yeah. हावर्ड लुटनिक, यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, आप समझ लीजिए यूएस के पर्सपेक्टिव से ये इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। और जो भी ट्रेड वॉर रिलेटेड बात कभी डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के सामने बोल देते हैं, जब पत्रकारों को समझ नहीं आता कि ट्रम्प का मतलब क्या था, तो सब लोग हावर्ड के पास पहुंचते और इनसे पूछते हैं कि आप बताइए यूएस अब क्या करने वाला है। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। रिसेंटली इन्होंने इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड Yeah, I mean, anybody in Trump's cabinet is important to the government because they're part of Trump's team. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जो पूरे भारत को मैटर करती है और ऐसे टाइम में मैटर करती है क्योंकि इस वक्त मैं कहूंगा इंडिया यूएस रिलेशंस एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। जैसे आपको पता होगा इस साल जो G7 समिट है बताया जा रहा है फॉर द टाइमिंग, हालांकि फाइनल अभी हुआ नहीं है, भारत इस बार G7 समिट को अटेंड नहीं करेगा बिकॉज इंडिया कनाडा के रिलेशंस जैसे आप लोग जानते हैं काफी हद तक Oh, true. I didn't even think about that. The tensions are also high between India and Canada. Because of the whole Palestine stuff, right? And they're not attending? खराब है। उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएसए की स्टेटमेंट्स आई है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट ना इंडियन पब्लिक किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात इवन जो यूके बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे ट्वीट क्रिस ब्लैकबर्न की, ये 20 साल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काम कर रहे हैं, कई यूएस लेड एनजीओस को भी ये रन करते हैं। ये भी बोल पड़े कि जब यूएस के कांग्रेसमैन कहते हैं कि a lot of US-led non-government operations or whatever NGO. What does NGO stand for? Let's double check and triple check NGO definition, just so I know. Non-profit organization. Yeah, a non-profit voluntary citizen group that operates independently from government control. Non-governmental organization is what NGO stands for. Okay. चाइना डोमिनेट करना चाहता है एशिया को। हमें चाइना से लड़ने के लिए मित्र चाहिए, स्ट्रॉन्ग एलाइज चाहिए, और भारत से स्ट्रॉन्गर एलाई कहां मिलेगा? True. No, I mean, India is probably the most powerful ally anybody could have in the world, especially going forward in the future. But you're seeing that region which China is absolutely trying to dominate, trying to assert its economic dominance as well as its military dominance. We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. ये रिसेंटली एक यूएस कांग्रेसमैन ने कहा था। इसके जवाब में क्रिस ब्लैकबर्न ने पोस्ट किया कि ये सब बात सही है, यूएसए को भारत की आवश्यकता है अगेंस्ट चाइना। दैट इज द मोस्ट बेसिक जियोपॉलिटिकल ट्रुथ जो सबको पता है। Where's his hand at? Is this what? Is this AI? This is his wife, right? What is he doing? Save that for the bedroom, Trump. Dang. मगर क्या यूएस इंडिया जेन्युइनली एक कैपेबल अलायंस बन पाएंगे जब वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? फॉर एग्जांपल
ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा कि यूएसए ने कोई भी लेसन्स नहीं सीखे। यूएसए लगातार मीडिएशन की बात I agree. I mean, I agree. I say this all the time. कर रहा था, जबकि इंडिया ये चाहता था कि सिंपली यूएस पाकिस्तान पर प्रेशर डाले ताकि पाकिस्तान आतंकवाद करना छोड़े, जिससे भारत के इनोसेंट सिविलियंस सेव रह सके। यूएस ये नहीं कर पा रहा। इंस्टेड यूएसए ने इंडिया की पेन, इंडिया की दर्द को यूज किया। Who is this guy again? Chris Blackburn? All of that is true, but India and the USA won't be able to build a truly capable alliance if they don't have each other's back in times of crisis. I'm going to look this guy up really quick. I feel like he might be someone worth keeping an eye on, you know? Blackburn. Chris Blackburn. Hey, oh my God. Okay, well, here it is. Abjit Chavda follows him. Indian Pixels follows him. Vizgrad24 follows him. Okay, well, I'm added to that list. I see people I know following him. I'm going to follow him. एक बार्गेनिंग चिप के लिए, ताकि ट्रेड डील और बढ़िया हो सके, या फिर ट्रेड और बढ़िया हो सके। जैसे ट्रम्प कह रहे थे, मैंने ट्रेड का यूज किया दोनों के बीच में सीज फायर करवाने के लिए। ये बात दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, चाहे अमेरिकन हो, नॉन अमेरिकन हो। ऑपरेशन सिंदूर में यूएस की परफॉर्मेंस एज ए फ्रेंडली कंट्री अच्छी नहीं थी। तो ऐसे टाइम में हार्वर्ड लुटनेक की जो कमेंट्स थी ना, पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही थी कि इंडिया के बारे में ये क्या कहेंगे। वेल, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने ये कहा है कि इनका एक इंडियन दोस्त है, ये काफी बार इंडिया इससे पहले आ चुके हैं, क्रिकेट खेलना इनको पसंद है भारत में, कई हाउस पार्टीज ये अटेंड कर चुके हैं भारत में। ओवरऑल ये भारत को पसंद करते हैं, मगर जब ये बात करते हैं ना यूएस गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो भारत ने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जो यूएस पसंद नहीं करता, जिससे I mean, this isn't surprising from Trump's cabinet. They want the whole world to buy everything from the U.S. India's Russian arms purchase rubbed U.S. the wrong way. Bilateral trade deal close. Lutnick. Wow, Lutnick. यूएस थोड़ा चिढ़ जाता है। ये जो वीडियो है हार्वर्ड लुटनेक की, ये देखिए। So the Indian economy is extraordinary. Your human capital capacity is amazing. The growth rate. Human capital capacity is amazing. But there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So maybe the government, but to your average everyday person, they're not going to care. I think it's perfectly fine. In my opinion, you know what? All power to India for being going out there and purchasing from whoever they want. The USA touts itself as some grandiose capitalist society, right? And then we have people like this that get upset when the free market of the world doesn't go the US's way. Like, why is the USA the only one that people can buy weapons from? Why can't they buy weapons from other people? And they should be allowed to buy other weapons from other people. If we, hold our American values in line and project them across the entire world, we should not be upset by this. But, then we have Howard Lutnick here. I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things just create India starting to under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which I think India is moving towards building their own military equipment. No? then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place. And I think that's where we are. Now, ये बहुत ज़रा बड़ी स्टेटमेंट है हार्वर्ड लुटनेक की। इन्होंने ये कहा है कि भारत ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं that got under America's skin. Now, ये जो मुहावरा है ना, ये Whoa, what are we doing here? Uh-oh. 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 You can't show that. Sorry. जो idiom है,
दैट्स अ वे टू काइंड ऑफ गेट अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। जो भी भारत करता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना, S-400 जो हमारे मिग फाइटर जेट्स हैं और वेरियस और डिफेंस इक्विपमेंट जो हमने इवन ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, वो भी एक इंडिया रशिया कोलैबोरेशन का ही पार्ट है। तो ये सब देखकर यूएस को काफी गुस्सा आता है। लिटरली गेट्स अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका। ये इस ईडियम का मतलब होता है किसी को अनॉय करना। अगर आप मुझको कह रहे हो या फिर कोई आपको कहता है कि जी यू गेट अंडर माई स्किन, तो वो आदमी कह रहा है कि आप ना मुझको अनॉय इरिटेट करते हो। तो ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इनकी सेकंड लैंग्वेज है तो मुंह से निकल गया गलती से। दे प्रीटी मच नो व्हाट दे आर सेइंग। और इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर ये अपनी बात खत्म करी, इन्होंने ये भी कहा ना सिर्फ आप True, the chances of a misspeak are much lower. But I mean, I will be the first to admit that sometimes my mouth moves without my brain telling what to say. रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हो, आप लोग ब्रिक्स का भी पार्ट, इन्होंने ये भी कहा कि एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स व्हिच इज ओ लेट्स मूव टू नॉट सपोर्ट द डॉलर एंड डॉलर हेजेमनी। ये कह रहे हैं कि जी ब्रिक्स बनाया ही इसलिए गया। I mean, the US dollar isn't going to be the world currency forever in the future. It's probably going to move on to some cryptocurrency, Bitcoin or something akin to that will pop up in the future. Uh, right now, the dollar is powerful because the United States is powerful. If any other country rises up into the same position that the USA is in, then the whole world will naturally shift to that currency. So it's either we're continuously bouncing between currencies for centuries, or we switch to Bitcoin, basically. था ताकि जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया में, इसको समाप्त किया जा सके एक टाइम पर। इंडिया उसका पार्ट है। अब ये बात देखिए, हावर्ड ने बोल तो दी, मगर कितनी अजीब बात है। देखिए 2024 से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बार बार ये कह रहे हैं इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर। कोई ब्रिक्स के किसी भी प्लान में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ब्रिक्स का ऐसा कुछ प्लान अभी के लिए लग रहा है कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी इमीडिएटली आने वाली है। अब कोई डिस्टेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जाए कंक्रीट। BRICS currency. This is like the euro. It's an interesting design. Who made this? Because this is not the Chinese flag. तरीके से वो अलग बात है, बट डॉलर की वैल्यू इन द फ्यूचर जो गिरेगी उसका रीजन सिंपली यही है, डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी पॉलिसीज, ये ट्रेड वॉर कभी करना कभी रोक देना, यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी इससे नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। वो यूएस के अपने काम है, दैट इज देयर ओन पॉलिसीज। बट ये बोल देना ओपनली कि जी इंडिया एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो डॉलर को कमजोर करना चाहता है एंड दैट रब्ड यूएस द रॉन्ग वे, बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं हे एटलीस्ट इन्होंने Yeah, Lutnick sounds a little sour. Lutnick doesn't like an open free market. ये तो बोला कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, उस पर भी ना एक अजीब सी स्टेटमेंट ऐड करी, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड, ये नहीं कि वी आर ट्राइंग हार्ड, इंडिया इज ट्राइंग हार्ड। इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएस सिंस बहुत से देशों के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, जो इनिशियल फ्यू कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम आ जाए, उसके लिए इंडिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है। और अगेन कहीं ना कहीं आकर भारत को भी ये कुछ इश्यूज रेज करने होंगे यूएस के साथ कि अगर कुछ चीजें हैं जो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, दैट गेट अंडर योर स्किन, और यू फील कि इंडिया रब्ड यू द रॉन्ग वे। हमारे भी काफी सारे प्रश्न हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तो ये आता है कि पाकिस्तान, जहां पे आए दिन आपके इजराइल के भारत के झंडे जलाए जाते हैं, जहां पर रिसेंटली अमेरिकन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया था क्योंकि यूएस इजराइल का सपोर्ट करता है, ये सबके सामने हुआ था। ये 2023 का मैं आपको दिखा रहा हूं आर्टिकल। उसके अलावा Pakistan launched boycotted campaign against USA Israeli products. Oh, I didn't even. What the heck is रिसेंटली भी that? आपको पता है कई Oh my केएफसी God. आउटलेट्स, कई पेप्सी के आउटलेट्स पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये कहकर कि जी यूएस सपोर्ट करता है इजराइल को। और चाइना का I अगर कोई mean, देश सबसे बड़ा I think we all know why. सपोर्टर है दुनिया भर में तो वो पाकिस्तान है। वही चाइना जिसको पीट हेग्सेथ ओपनली कहते हैं कि ये यूएस के लिए बड़ा थ्रेट है, वही चाइना जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं। शी जिनपिंग की बेटी को कहा जा रहा है कि जी ढूंढ के लाओ, कहीं पर अगर यूएसए में है तो उसको बाहर निकाल दो। उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं सारे इशू पर। वही चाइना जो यूएस के लिए इतना बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है और जो यूएस कहता है कि जी देखिए ब्रिक्स में रहकर एक नई करेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान उस चाइना का नंबर 1 एलाई है, आयरन ब्रदर है। ये लोग चाइना से वेपन्स परचेज करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना को एक बेटर एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान इंडियन ओशन का। ये सब चीजें यूएस को नहीं दिख रही।
मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा कि कोई अंडर द स्किन यहाँ पे जाता या नहीं जाता, बट एक ऐसा देश पाकिस्तान जहाँ पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, आज भी कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं। यूएस उस कंट्री को $400 मिलियन। Oh my God. Look, they used the right map. Look, you can see like the tail end of Alaska up here. They used the right map. Oh my goodness. देता है ताकि उनके F-16 के फाइटर जेट की मेंटेनेंस हो सके। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प गिव्स पाकिस्तान F-16 अ नियरली 400 मिलियन बूस्ट। फिर आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए कैसे भी करके पाकिस्तान। Yeah, this is all terrible. Like, I don't support any of this. I will say this, like, F-16 deal from the beginning was, this was in February, right? This was like a deal through Biden that, the U.S. for whatever reason didn't, back out on, but yeah. And then what? Yeah. I don't know. I'm not a big fan of this whatsoever. I've made my statement on this many times. Not a fan at all. But I'm just one man. I'm one man. And my voice is very tiny right now. को जिंदा रखते हैं। तो अगेन मैं तो यहाँ पर ये बोलूंगा, ना इंडिया की जनता को ना यूएस की जनता को समझ में आता है कि यहाँ पर यूएस करने की कोशिश क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिक पोजीशन को लेकर क्या इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इतनी सारी बाकी बातें पाकिस्तान की ये इग्नोर कर देते हैं। और आई थिंक अब टाइम ओपनली आ चुका है। ओपनली यूएस के मिनिस्टर्स, इनके सेक्रेटरीज ओपनली कह रहे हैं कि जी इंडिया जो परचेज करता है रशिया से वेपन्स, हम इट गेट्स अंडर आवर स्किन। हम भी कह सकते हैं जो आप पाकिस्तान की हेल्प करते हो दैट गेट्स अंडर आवर स्किन। उल्टा हमको तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही देश है दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हर्ट आवर इनोसेंट पीपल। और ये तो चलो मैं बात कर रहा हूँ भारत की। इजराइल जो यूएस काफी बार कहता है इनका सबसे। I didn't see this. December 2016, Pakistan makes nuclear threat to Israel in response to fake news. That's ridiculous. I didn't see this. I didn't see this at all. I mean, back 2016 was a pretty low year of my life, to be honest with you. So I wasn't looking at anything geopolitics at the time. But this is weird. Why? Over fake news? इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री है। इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। इजराइल के केस में भी आप अगर देखो, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट दे चुका है इजराइल को काफी बार। किस बेसिस पर? फेक न्यूज के बेसिस पर। इमेज कहीं की होगी। अगेन पाकिस्तान में फेक न्यूज रियल न्यूज क्या है इनको कभी समझ नहीं आता। ना आज समझ में आया, ना 10 साल पहले समझ में आता था। तो कहीं से कुछ गलत न्यूज पढ़ ली। इजराइल को ओपनली पाकिस्तान के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, जी हाँ उस वक्त भी डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ओपनली यहाँ पर धमकी दे दी कि वी विल डिस्ट्रॉय देम विद अ न्यूक्लियर अटैक। तो आई डोंट नो व्हाई यूएस सपोर्ट्स पाकिस्तान। यूएस का टैक्स पेयर मनी क्यों जाता है पाकिस्तान को? नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान की लोकेशन है, एक टाइम पर अफगान वॉर के टाइम में पाकिस्तान की काफी इंपॉर्टेंस थी, तो यूएस को चाहिए था पाकिस्तान के एयर बेसिस का एक्सेस। बट आज के समय तो यूएस पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है ये कम कर सकता है ना, बट दे डोंट डू दैट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया को भी अब खोलकर पब्लिक फोरम पे बात करनी चाहिए? अगर यूएस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कि इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे हम बड़े नाराज हो गए थे, हमें भी अब खुल के बोल देना चाहिए कि आपकी भी कई पॉलिसीज नाराज, क्या किसी को आपकी खुद की जनता को समझ नहीं आती होगी कि आप कर क्या रहे हो? सो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए, All right. PD10, everyone. PD10. PD10, 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 PD10. Howard Lutnick. Good old Howard Lutnick, huh? I'll be honest with you, he's probably not really talked about whatsoever. The only reason he's even in Trump's cabinet is because he's a billionaire who's his friend. So he's just another, Trump orbiter, so to speak. I'm just looking him up really quick. I'm going to go to his Twitter account. Let's see what he says on his Twitter account. 41st United States Secretary of Commerce, amazing wife, 4 great kids. Yeah, 14 hours ago, I spoke at U.S.-India Strategic Partnership Forum Annual Leadership Summit tonight. We have a great relationship between our countries. I'm optimistic for trade deal soon that will benefit both nations. But then he's also upset that that India decides to use the capitalist open free market of the world
to purchase weapons from elsewhere. See, like, this just doesn't make sense to me. Not everywhere needs to buy from the U.S. Now, that said, would the U.S. prefer that? 100%. 100% they'd prefer that, but not everywhere needs to buy from the U.S. Come on now, Lutnick. Come on, Lutnick. To check China, they need India to be alive. To check India, they need Pakistan to be alive. This is USA. I don't know if I don't know if that's true. I'm sure there's other metrics or other outlets that the USA could utilize. But Pakistan was once very vital, important, I guess, to Asia and the Middle East for the U.S. English is the secondary language of the USA. First language is hypocrisy? Maybe. I mean, yeah, especially in like politics, the every single politician is speaks out both sides of their mouth. Just like America feels that India does certain things that get under America's skin, similarly, when America favors Pakistan, that also gets under India's skin. Yeah, I agree. It gets under my skin as well. We will never forget how USA helped dictatorship in 1971 and how a dictatorship like Russia helped a democracy like India. It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. Henry Kissinger. It's not India's duty to please USA. India will not be what is best for India. Will do what is best for India. Mega sounds like make India great again. In my opinion, U.S. knows how to play games. They support India and also keeps their hands on Pakistan and Bangladesh so that if the future India goes against them, they can control using our enemies. The duality of USA is not new it's been for decades. True. If USA is not happy, then it's good for India. As a bloc resident, I stand with India. Hope we get liberation soon. America is like a possessive partner who never help you fully. Instead, help partially to your enemy, but expect full loyalty from you. Well, the problem with that is the ever-changing climate and shift in political positions that the U.S. has every 2 and 4 years. Because every 2 years, there's a midterm election. Every 4 years, there's the election. And there's huge swings in our political stances because the political parties here are so different. And that, unfortunately, leads to, not being able to stand up firm on a more world scale on some of these stances unless they're able to get it written down into some sort of agreement. I mean, you saw how much of a shift things went when Trump got into the office, and it's like, okay, tariffs on everybody, and it's just like a complete 180, right? Complete 180 from Biden. Now, did I like what Biden was doing? No, of course not. I mean, it's just frustrating. America is like a possessive partner. Universal truth is never believe USA at any cost. India will buy from whoever it wants. India will do whatever is best in interest for its people. Nobody can dictate us what to do, period. We will never forget how America actually didn't help India in 1999. I can feel the anger of Prashant and Sir in the hypocrisy of USA. Proud to be Indian. Once a legend said, hypocrisy. As an Indian, I stand with my government. If U.S. is not happy, then India is 2,000% on the right track. Not USA. No, any one country that loves India. What kind of English is this? India will do what is best for India. India will be happy now. America don't want to see India progress. Jealousy on peak. Always supporting India from Balach, and will support India. So whenever India will progress, U.S. will try to pull us back. I don't know if that's the case. American government wants everyone to progress forward, but American government wants that to be attached to them. That's the difference.
The U.S. wants you to progress into the future, but they want you to use U.S. weapons, U.S. technology, U.S. companies, U.S. dollar. It's not that they don't want you to progress. You know? Jealousy on peak. India growing proved. Absolutely brilliant analysis. It's actually high time India had on discussion with U.S. government regarding these issues. What a fearless opinion, sir. Very few YouTubers dare to say it directly. We don't care about U.S. We enjoy our freedom here. Excited for IPL final. Very true statement. Being an enemy of America can be dangerous, but being a friend of America is fatal. All right. Well, I think that's going to be it today. Just one statement I will say. Don't listen to Howard Lutnick. I mean, he's a billionaire, so he's like something. He's doing something right, but I don't know. There are many people on Trump's cabinet that are solely there just because they're Trump's friends. So they don't hold political weight, the same political weight as other people in U.S. government hold. But his statement is rather crass. It's silly. It's very silly. It's very silly that he would be upset. But again, you know, he's also like he's a billionaire. He's got that capitalist mindset. He wants everyone to purchase from him. So of course he's going to say something like that. Link to this video will be in the description down below, everybody. PD10, everyone. PD10. I'll catch you on the next one. Yeah. Take care. Goodbye.